हेलो एवरीवन, वेलकम टू kidsNpedia। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। तो इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट मोटिवेटेड। सो मैं आपके लिए लाई हूँ ये मोटिवेशनल कोट। नाउ लेट्स गो थ्रू इट। डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। ओके, सो चैलेंज योर लिमिट्स। गॉट इट? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर आर्टिकल्स? तो आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज होते हैं या नाउन फ्रेजेस से पहले यूज होते हैं, ठीक है। और क्यों यूज होते हैं? ताकि वो उन्हें डिफाइन कर सके, उनमें मीनिंग डाल सके। जैसे ही हैज दैट बुक, ओके, शी इज अ ट्रबल मेकर। गॉट इट? सो दीज आर ऑल आर्टिकल्स। आई थिंक ये बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस क्लासेस में, है ना। नाउ आर्टिकल एंड इट्स पार्ट। आर्टिकल जो होता है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स में डिवाइड होता है। गॉट इट? अब हम इनडेफिनाइट आर्टिकल से शुरू करते हैं। नाउ व्हाट आर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स? सो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैव टू फॉर्म्स, ए एंड एन, ओके, एंड दीज टू फॉर्म्स आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स। अब आप कहोगे काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? व्हाट आर काउंटेबल नाउन? So nouns which are countable, like you can count fruits, okay, you can count books, you can count people, okay. So these nouns are all countable. That's why they are known as countable nouns. Now, but they are used for singular. So here, if we say fruits, it will be fruit. Okay. If we say books, it will be book. If we say people, it will be person. Okay, simple. So it is used before singular countable nouns to indicate the indefiniteness of the given noun. For example, a nurse. Nurse is a countable noun and it's singular. So here we use a. An is used before vowels which are a, e, I, o, u. You must be knowing it. So here it's u. It's a vowel. That's why we are using an. A horse, an orange. Got it? Next, definite articles. So here the article use the word the, okay, to indicate the definiteness of the mentioned noun. Simple. Now it is used before singular countable noun that I told you in the previous slide. बहुत आसान है। Uncountable noun क्या होते हैं? Here. Okay, you cannot count what, you know, cannot count love. Okay, so these are basically uncountable noun, okay, and plural countable nouns, okay. So singular and plural countable nouns. So books can be indefinite articles and book also, singular and plural. Now here, the sky, the book, the pretty girl. So the sky, the book, the pretty girl. Got it? तो ये सब definite articles हैं. This was just it for the video. Hope you guys liked it. Please do like, subscribe and share this video. Till then, bye bye.